Namaskar, I am Nishant Kumar Azad, and in this episode of In Conversation with Organizer, we have guest Roshan Giriji. He is General Secretary of Gorkha Janmukti Morcha. Namaskar, Roshan ji. Roshan ji, you fought the Lok Sabha poll together with Bhajpa in 2019, and now you are with TMC. What is the reason you withdraw your support from BJP and now supporting TMC in this election? You see, we were with BJP since 2009. We supported Jaswant Singh ji. He won the election with more than 3 lakhs vote. We supported SS Ahluwalia ji. He also won with more than 2 lakhs vote. And we supported Raju Bista. He won with more than 4,50,000 votes. Since BJP did not do anything for us, they promised us that they will go for a permanent political solution and grant tribal status to 11 Gorkha communities. But despite our meeting with Amit Shah ji, Bhupendra Yadav ji, Ramlal ji, BL Santosh ji, Kailash Vijayvargiya ji, and host of Bengal leaders, we were only kept in dark. They never granted tribal status to 11 Gorkha community, and nor they went for any political solution. So we thought that it is better to part with BJP and join hand with TMC, since they called a meeting for Gorkhaland on 7th of October 2020. Okay. But due to the pressure tactics of BJP Bengal unit, they changed the subject to GTA, Gorkhaland Territorial Administration, which is a semi-autonomous body in the Darjeeling Hills. So we thought that it is better to part off with the BJP, since they did not give us anything in our long association with BJP. So You said that BJP is not serious about the promises what they have made to you, but in Parliament, if I remember that Raju Bist had raised this issue, raised that. Raising and granting is different. Raju Bista, he raised the issue so many times, but the government gave a deaf ear to our demand, and nothing was given to us. So we had to switch the side. So, if I remember that Mamta Banerjee was against your demand, and during the protest, that we can say violent protest in 2017, the state government had imposed so many sections on you, and because of that you was out of Kolkata for almost 3 years. Now you are back. So almost there are more than 100 cases on you. So is there anything which have made? Is there any deal behind the doors which bring you here and made deal with TMC? No, you see, Miss Mamta Banerjee, because- Banerjee, she said that I will fulfill the permanent political solution. So now we have alliance with the TMC for the permanent political solution and granting of tribal status. The question is, Miss Mamta Banerjee had passed a resolution, and she had passed this in her cabinet in 2014, and then she had already sent to the Union Ministry. She had also written to the Prime Minister, the Tribal Minister. So that is why we sided with the TMC-led Mamta Banerjee government. But there are allegations कि ये जो आपके ऊपर इतने केसेस हैं उसको हटाने का डील हुआ है, और उसके वजह से यू केम विथ TMC एंड ममता बनर्जी. देखिए, वो तो पॉलिटिकल केस है. हाँ, आंदोलन का समय में लगा हुआ पॉलिटिकल केस था. तो पॉलिटिकल चार्जेस ना नहीं, सीरियस चार्जेस होने से भी पॉलिटिकल है.
हाँ पॉलिटिकल है। आंदोलन में तो हम लोग ने तो हिंसात्मक आंदोलन नहीं किया, वो वैसे ही हो गया था। हाँ कुछ मिसक्रिएंट ने किया था। तो केसेस का भी अभी गवर्नमेंट रफा दफा कर रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। हाँ क्योंकि पॉलिटिकल केस था, पॉलिटिकली सॉल्व होना है ये, तो ये सब हो रहा है अभी। Your party GJM itself is divided into two groups. One is Bimal Gurus and one is Binoy Tamay group. तो ऐसे में क्या लगता है कि जब आपकी पार्टी ही दो गुटों में बटी हुई है, तो आपका जो डिमांड है उसको लेकर के आप कहाँ तक आगे जा पाएंगे? देखिए विनय तामाङ गुट का जनता में कुछ प्रभाव नहीं है। बट दे आर सेइंग कि उनका आप मतलब आपका कोई प्रभाव नहीं है जनता। नहीं, वो गलत बात है। अब वो तो वोट में दिखाएंगे ना जनता का किस पर प्रभाव है, वो तो वोट तय करेगा। वो लोग का पास पैसा है, इसीलिए वो लोग जनता हमारा साथ है बोल रहा है, लेकिन वास्तविक जनता बिमल गुरुङ जी का साथ है। यू आर सेइंग जनता बिमल गुरु जी के साथ है, but your close associate leave the fraction in the party. Your close associate who has been the political advisor of Gurmu ji, that what is his name, Swaraj Thapa ji, he also joined भाजपा। नहीं, स्वराज थापा जी का बात देखिए। स्वराज थापा एमपी इलेक्शन में भी कैंडिडेट होने का इंटरेस्टेड था, उसको टिकट नहीं मिला। राजू बिष्ट को टिकट मिला तो स्वराज थापा ने हमारा पार्टी को छोड़ दिया। हाँ अभी वो एमएलए इलेक्शन में भी खड़ा हुआ था, उसको 300-400 वोट मिला था। हाँ तो उसका कुछ है ही नहीं। स्वराज थापा छोड़ के क्या हुआ, हम लोग को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट इफ आई सी कि देर आर टू फ्रैक्शंस, close associates are leaving party, doesn't it convey a message that everybody is fighting for their individuals, अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं, they are not serious about the cause which you were fighting in 2017 and no, you see those with vested interest they have left the party, but we are serious for a cause, and our party when it was established in 2007 it was established to create a separate state within the framework of Indian Constitution. So we are fighting for that in a democratic manner, and we will continue to go ahead with it. Darjeeling has seen two major violent protests, one in 1984 and another in 2017. But after that also there is no conclusion. Do you think that in a country like India where सबको साथ लेके चलने की बात होती है, वहाँ आपका डिमांड अ सेपरेट स्टेट का डिमांड कितना जस्टिफाई है? देखिए 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हुआ था तो लिंग्विस्टिक लाइन में हुआ था, तो हमारा तो संस्कृति हमारा भाषा तो भिन्न है। हाँ रेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से इट इज़ वेरी डिफरेंट। तो हम लोग को क्यों नहीं मिल सकता है? बिहारी का लिए बिहार है, मारवाड़ी का लिए राजस्थान है, मणिपुर का लिए मणिपुर है, नागा का लिए नागालैंड है, तो गोरखा का लिए गोरखालैंड क्यों नहीं हो सकता? बट दार्जिलिंग इज़ वेरी क्रिटिकल स्टेट फॉर इंडिया in many terms. Its border adjoining to 4 countries, Nepal, Bhutan. When Mizoram was created, it was created as a border state. Why not Gorkhaland? It will be in the best national interest if it is created. Why do you think that it just tell me ki why is it necessary to separate Gorkhaland from Kolkata? It's already a part of, there is already a state government and almost... No, you see, it's people's aspiration. People's aspiration should be respected in a democratic country. But if I see कि यहाँ पे in Darjeeling there are so many ethnic and indigenous groups. There are like Rajbansis, Koch. तो हर कोई, if everybody will start demanding a separate state, कैसे चलेगा ये? नहीं देखिए, कूच बिहार का, राजवंशी का, हाँ ये लोग का इतिहास भी डिफरेंट है।
हाँ That's what I am saying ना कि if Different है। everybody will start 1950 में ये लोग का पार्ट डी स्टेटहुड था जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, तो ये लोग का भी जस्टिफाइड डिमांड है। हाँ, तो हम लोग तो लिंग्विस्टिक बेसिस की तौर पर क्वेस्ट फॉर एन आइडेंटिटी है ऑल राउंड डेवलपमेंट का लिए, तो ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना। तो आपको क्या लगता है कि सीरियसली ममता इज सीरियस अबाउट योर डिमांड और जस्ट सी अलाइंड विथ यू फॉर द पॉलिटिकल गेन्स? We have sided with Miss Mamata Banerjee for permanent political solution. Let us wait and see. But if we see the history of JJM and TMC, they were almost into North Pole and South Pole. In many interviews, you politics, have. in politics it happens, you see. North Pole and South Pole also sometime it comes together. If we see the history of Gorkhas, they have lots of contribution in freedom struggle, and still they have regiment. तो why is it necessary to, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्यों डिस्टर्बेंस? कुछ ठीक नहीं हुआ है। हम लोग देश का लिए मर रहा है, मिट रहा है। हाँ, हम लोग देश का लिए बॉर्डर्स में तैनात है। हाँ, प्री इंडिपेंडेंस में भी हम लोग ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था। देश का हिस्सा तो आप हैं ना? है, तो सेपरेट स्टेट भी तो देश का ही हिस्सा है। वो देश से बाहर कहाँ है? बनाना चाहिए सेपरेट स्टेट। So you saw that Mr. Roshan Giri ji is very much serious about their demand of a separate Gorkha land, and they have aligned with TMC to solve their purpose. But and their allegation are that BJP hasn't fulfilled what they have promised to them, and that is why they now align with TMC. अब देखने वाली बात हो कि क्या सच में TMC is serious about their demand, या TMC is just using them for their political gains. Thank you for talking to us, Saurabh Giri ji. Thanks a lot.